ये पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट, नहीं, आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट, FeNO3 was thrice, पोटेशियम थायोसाइनेट, हाँ। बी ऑप्शन लग रहा है हमको फिर। ओके सर। बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। बट दिस इज, वो है आपकी किताब में ही है ये, बट इट इज वन रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। आयनिक इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त ये रिएक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो वहां पर हम एक बार पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। जब Fe आयरन नाइट्रेट और पोटेशियम थायोसाइनेट को मिक्स करते हैं, देन यू गेट अ कॉम्प्लेक्स दैट इज Fe, सॉरी, आयरन थायोसाइनेट है ना, FeSCN। तो इसमें जब ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे आप ना, C2O4 एंड C2O4 2 नेगेटिव, तो दो हाइड्रोजन होगा। यहाँ से ऑक्सलेट आयन मिलता है, ऑक्सलेट आयन से मिलता है फिर FeC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। नाउ इफ आयरन साइनेट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑब्वियसली आयरन साइनेट का जो कलर है रेड, वो कम होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने उल्टा लिखा हुआ दैट इट इंक्रीजेस, बट इट विल डिक्रीज रादर। फाइन। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, आप लोग को एक फॉर्म भेजा होगा ना। जी, एक फॉर्म मिला होगा आप लोग ने स्ट्रॉन्ग वीक सिलेक्ट करने के लिए। यस नहीं, सर। हाँ वो जी। आप लोगों ने कर लिया, किसका दीजा? आई डेंट फिल इट येट। आई विल फिल इट। अच्छा, यू हैव नॉट फिल्ड इट, ओके फाइन। These are some easy questions, इनको आप पहले कीजिए। You can send the Zoom chat itself because these are, like, you can type them out. If you want to send on WhatsApp, that's also fine.
Okay. Khadija, do you know how to do this? Yes, Khadija, do you know how to do this? So we have Hg and mercury. No? Hg, mercury is Hg, chloride is Cl, and they are saying the oxidation state of mercury is 2. And chlorine का जो valency होता है, that is 1. So you can do the exchange. So HgCl2. Hg, my bad, Cl2. Similarly, nickel sulfate. So nickel will be having the oxidation state 2. SO4, it has a charge 2. That is why this will be also 2. That is why the formula is going to be NiSO4. For iron 3 sulfate, we have Fe, that is 3. SO4, that is 2. Exchange will take place and it will be Fe2SO4 whole thrice. Then we have chromium 3 oxide, that is Cr, which is having oxidation state 3. Oxygen has an oxidation state of 2. This will exchange and आपके पास जो formula होगा, that will be Cr3O2. Right, next. Now in this question you have two different sections. आपका सारा सही है हर्षा? Sir, it's Fe2. here too, right? My bad. So Cr2O3. जी. Good evening, sir. Good evening, Rishita. How are you? I'm good, sir. What about you? I'm also good. So what, you were busy with pre-boards or something? Yes, sir. They got over yesterday. एक तो मुझे समझ नहीं आता आप लोग की ये 11th क्लास में भी जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना मिडिल ईस्ट में, हाउ वाज इट बाय द वे? It was good, sir. Yesterday was chemistry. Yesterday was chemistry. So everything, all the pre boards are over? Yes, sir. But from 9th, my exams start again. Finals. Yeah, exams as in what? Finals. Final exam. Yeah. Okay. So I think that's why you have filled that form also quite quickly. Just give me a second. Let me see. Acha, and try this question, guys, and send the answer on my WhatsApp or the Zoom chat, wherever you feel comfortable. So there are a lot of chapter in which you have marked as weak, Rishita. For example, you have atomic structure, classification of elements and periodicity, chemical bonding, thermodynamics, organic chemistry, or not thermodynamics, redox and hydrocarbons. Hydrocarbons. Huh. So, for example, in atomic structure, what portion is weak? So all the theory parts of the Rutherford models are there are many there's a lot of theory in the postulates and the negative effects of Bohr models and stuff. It's a lot to remember. हाँ, so देखिए उसके लिए तो आपको you just try to convert it into a single sheet. ठीक है?
द मोर यू प्ले विद द कंटेंट ना, उतना ज्यादा आपकी मेमोरी में रहेगा. यू ट्राई टू मेक अ वन वन पेज जिसमें यू हैव अ टाइमलाइन टाइप ऑफ थिंग कि सबसे पहले ये मॉडल आया, उसमें ये खराबी थी. ठीक है, उसके बाद ये मॉडल आया, उसमें ये खराबियां थी, उसके बाद ये मॉडल आया. ठीक है, so that will help you remember, not in the understanding part, right, Rishita? Or is there any difficulty in understanding also the experiment and then what were the results? उसमें भी दिक्कत है क्या? No, sir, not an atomic structure. नहीं. तो okay, fine. So the only thing that you are having problem is with remembering, right? Yes, sir. ठीक है. So उसको like what help करना है, बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं उसमें. एक तो एक आई कैन सजेस्ट दैट ओ व्हाट वेज यू कैन यूज. तो एक तो ये है लाइक इफ यू प्ले विद द कंटेंट ना, अब तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा. दैट थिंग दैट यू क्रिएटेड दैट विल हेल्प यू रिमेंबर द कंटेंट आल्सो. ठीक है. व्हाट एल्स? Yes, sir, that's great. Like for theory, the only problem is that there's a lot to remember, but other than that, I understand everything properly. You don't have problem with numericals in atomic structure, right? No, sir. Right. ठीक है. तो ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम आगे बढ़े. हम लाइक आई थिंक यू हैव गॉट सम आइडिया व्हाट टू डू एंड देन उसमें भी अगर नहीं कुछ हो पाए देन यू विल लेट मी. फाइन. Yes, sir. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? Again, sir, like I'm fine with all the S block and the P block elements, but then all the families inside the elements, the oxygen family, the boron family, all of that. My teacher yesterday when we asked her if it's important before in the revision classes, she told that yes, you have to learn all of these, and then it's like a lot of What you learn? it, Wait. What you have to learn? like the properties of oxygen family and boron family and all the other ones that are there in the textbook. ऑक्सीजन फैमिली की प्रॉपर्टीज तो नहीं है इसमें. So she gave it in our notebooks. उन्होंने अलग से दिया हुआ है. Huh, but I thought she gave it from a textbook. I mean, they don't really tell us to read from a textbook because everything she gives us is from a notebook. अच्छा. सो लाइक जैसे कि अच्छा, इफ यू हैव द ऑक्सीजन फैमिली में लाइक व्हाट प्रॉपर्टीज डिड शी गिव कि दे विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा लाइक ये द And कंपाउंड्स. what and all the elements that include in that proper in the family. एलिमेंट्स तो भाई आसान है ना, जैसे उससे टीपों से आप याद कर सकते हैं, है ना. ऑक्सीजन, सल्फर, Yeah, सेलेनियम. that's fine. That's fine. After that, what else? Like what if there's like 6 elements that are there in one family? Mhm. She gave Mhm. us the uses of each of those elements, and there are like 5 different families. So we have to Very learn a lot of good. that. ये तो फिर मेमोराइजेशन में तो व्हाट आई कैन से यू कैन यूज समथिंग की आप ऐसे रूम्स में आपने डिवाइड कर दीजिए, लाइक थिंक विजुअलाइज अबाउट इट कि इन दिस रूम वी हैव दिस ऑक्सीजन फैमिली और यहाँ पे ये यूज, मतलब यू कैन हैव टू इनकॉर्पोरेट द मेमोराइजेशन टेक्निक्स, है ना. मतलब जो आपने उसको पढ़ पढ़ के लिखे हैं, लाइक कंसेप्चुअली तो दीज आर फैक्चुअल थिंग्स ना, दीज आर नॉट कंसेप्चुअल. लॉजिकल और कंसेप्चुअल नहीं, फैक्चुअल चीजें हैं. ठीक है. तो मतलब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जैसे अंडरस्टैंडिंग की नहीं, रिपीटेशन की जरूरत है ना. तो उससे वो हो जाएगा. ओनली दैट थिंग, और उसकी वजह से आपने उसको वीक बोल दिया क्लासिफिकेशन. I mean, yeah, but for redox reactions, I didn't properly understand the basic medium, but बेसिक मीडियम पार्ट, है ना. yes, बेसिक मीडियम पार्ट. ठीक है सर. आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम हर्षा. ठीक है, वी आर डूइंग sir, रिडॉक्स रिएक्शन ओनली टुडे. जी जी. I didn't mean to put the chemical bonding as weak. It's fine. So you did not mean to put chemical bonding as weak. Okay, fine. What about hydrocarbons? Reactions याद नहीं हो रहे, क्या हो रहा है? I didn't put that. I put that weak. हाइड्रोकार्बन्स, हाँ आपने वीक लिखा हुआ है.
Yeah, sorry, sir. That was also fine. I don't have any problem in that. अच्छा ठीक है, you can, I don't know if whether you can edit this or you cannot edit this. If you can edit this, then it will be good if you edit it, है ना? हम आपको भेज देते हैं जरा कि आपने क्या भेजा था, ठीक है? I have sent it to you, your responses, okay? Okay. So moving on to this question. By allocating oxidation numbers to the atoms determine what is being oxidized and reduced in this redox reaction. तो सबसे पहले आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्रिप्टन का यहाँ पे है 0, हाइड्रोजन इज +1, फ्लोरीन इज -1, ऑक्सीजन हियर इज 0 बिकॉज इट इज इन दिस स्टैंडर्ड स्टेट, है ना? नाउ क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम नहीं बैड, क्रिप्टन इट इज रिएक्टिंग विद फ्लोरीन और ये क्रिप्टन फ्लोराइड बना रहा है, सो इट विल बी नाउ -2 बिकॉज फ्लोरीन का तो -1 ही रहेगा यहाँ पे भी. नाउ हाइड्रोजन इट इज स्टिल +1 और ऑक्सीजन का हो रहा है -2. So krypton is changing from 0 to -2. So krypton is being reduced. Sir, how is it -2? Oh my God, my bad. Sorry, +2. Sorry. Yes, thank you. +2. मेरे से गलती होगी, यहाँ पे -1 है, it will be +2. So krypton is oxidized. And what do we have here? Oxygen. 0 से -2. So oxygen is reduced. Reduction. ठीक है? चलिए. Let us see. I want to give you some questions from calculation of oxidation state. Yeah. इसमें मिक्स है, लाइक देर आर सम नॉर्मल वंस आल्सो, देर आर सम स्पेसिफिक वन जिसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना? चलिए. आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर नॉर्मल वंस ओनली. चलिए, बट स्टिल स्टार्ट कैलकुलेटिंग. ऑल ऑफ यू कैन डू इट, राइट? रेज योर हैंड इफ एक एक कर बताएंगे. खदीजा, यू आर नॉट आंसरिंग. आप मतलब आंसर करना ही रोक देते हैं. यस खदीजा, कैन यू डू दिस? यार आप आंसर नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? ऋषिता एंड हर्षा, यू कैन डू दिस, राइट? Yes. Yes, sir.
Yes, Harsha, your answers are correct. Very good. Assalamu alaikum, Amna, am I audible? Walaikum assalam, sir. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. आप थोड़ा लेट हो गए आज? Yes, sir. Network problem was there. अच्छा नहीं. Should I solve it? See here, guys. First one is K2 CrO4. Cr2 yes, Cr, no? CrO4. So here potassium will be what? +1. So 2 and chromium के लिए X plus 4 into -2. This whole thing will be equal to 0 because the overall charge is 0. So here we'll have 2 plus X minus 8 is equal to 0. X is equal to -6. We'll go that side. It will be equal to +6. Second, we have K2 Cr2O7. Here K2 will be 2 into 1 plus 2x plus 7 into -2 will be equal to 0. So here we have 2 plus 2x minus 14 is equal to 0. So 2x will be equal to -14 plus 2 minus 12 will go that side, it will be plus 12, and x will be equal to +6. Then we have Cr2O2Cl2. I doubt this compound exists, कुछ typing mistake हो सकता है यहाँ पे, but according to whatever they have given, this will be 2x plus 2 into -2 plus 2 into -1. This whole thing will be equal to 0 because the overall charge is 0. Here we'll have 2x minus 4 minus 2 is equal to 0. 2x will be equal to -6 will go that side, it will be +6. And x will be equal to 6 by 2, that is equal to 3. ठीक है? Next is Cr2SO4 whole thrice. Here we have 2x plus. Now, SO4 whole thrice ही जो है ना, इसके पूरे के ऊपर चार्ज होता है -2. So I can put -2 here directly like this. This will be equal to 0. Okay. Now, this is 2x is equal to -3 into -2 -6 will go that side. It will be +6. And x will be equal to +3. At last, we have MnO4 negative. Here, Mn is x plus 4 into -2 will be equal to -1. And x will be equal to -8 will go that side. It will be +8 minus 1, that is equal to +7. Okay, so these are all the values. If you have any doubt, then let me know. So if you are done writing this, they can write this question. Okay. Balance the following ionic equation in basic medium. तो जो लोग नहीं किए थे oxidation state, they please copy the oxidation state down. And after that, write this question. और जिनको नहीं आता है बेसिक मीडियम में, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे.
चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस डाउन, और ये सवाल भी लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ठीक है, आई विल आस्क सम क्वेश्चन गाइस, और प्लीज आंसर, है ना। जिनको भी प्रॉब्लम होती है ना एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, तो उनके लिए खास तौर से दोज हु आर डूइंग इट, आप लोग अपना कीजिए। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ फ्यू स्पीशीज, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, तो जनरली हम बोलेंगे कि जैसे आयोडीन हो, जैसे आपके पास जिसका चेंज होता हुआ दिख रहा है, या तो सबका लिख लें आप, दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है, अगर आप सबका लिखेंगे सो mn का यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट इज +7, एंड यू सी mn हियर, सो MnO2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर फॉर mn, इट इज प्लस हाउ मच, टेल मी, रिशिता, आमना, खदीजा, हर्षा, MnO2 है तो कितना होगा, minus x प्लस 2 इंटू -2 ना, -2, yeah, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, +4, 4. ठीक है। अब इसकी या अच्छा ठीक है, यू टेक अ बिट ऑफ टाइम रिशिता इन सॉल्विंग दीज, इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। सी द आइडियल थिंग इज कि आपको ना ये कंपाउंड देखते ही अगर दिमाग में आ जाए दैट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट विल बी मच बेटर। ओके, तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, दैट व्हाइल लुकिंग एट द कंपाउंड यू कैन कैलकुलेट इन योर हेड इटसेल्फ। ओके, मूविंग ऑन, I2 में इट विल बी 0, एंड हियर I इज -1। तो यहाँ पे बेसिक हम लोगों को जो चीजें थी ना वो हम लोग को यहाँ पे मिल जा रही कि व्हाट इज हैपनिंग विद मैग्नीज, मैग्नीज के साथ क्या हो रहा है, Um, reduction. reduction, manganese will gain electron, makes sense, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, MnO4 नेगेटिव, ये कहां से कहां जा रहा है, एक सेकंड, +4 से सॉरी +7 से +4, दैट मीन्स इट इज ईटिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, and it is getting converted to MnO2. Right now, we are not trying to balance anything else. We are just trying to add in the electrons, and we just need to balance the manganese, जो यहाँ पे balance होना है. This is happening, and iodine में क्या हो रहा है? We have 2 iodine, 2 I negative. It is getting converted to I2. So for each iodine, we need to lose 1 electron. जितना iodine use करें वो 1 electron lose करेगा. Here we have 2 iodine, so it is going to lose 2 electrons. This makes sense? Yes or no? Please middle here. यहाँ तक समझ में आ रही है Yes. सबको? ठीक है। नाउ वी नीड टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। सो नाउ योर न्यू इक्वेशंस, इट विल बिकम 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2 MnO2, and if you multiply 3 it will be 6 I negative give 3 I2 plus 6 electrons. You can cancel these electrons and then you will write the overall reaction. Overall reaction is 2 MnO4 negative plus 6 I negative gives 2 MnO2 plus 3 I2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे O2 भी है, तो उस O2 को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो इशू इन दैट। नाउ अब यहाँ पे आता है, सी द इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड, नाउ वी नीड टू बैलेंस दी चार्जेस, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बैलेंस करना है, यू नीड टू बैलेंस दी चार्जेस। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, यू नीड टू कैलकुलेट दी ओवरऑल चार्ज हियर। सो हियर वी हैव 2 into -1 plus 6 into -1, so it will be -8 here, and here the overall charge is 0. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me till here. Yes, sir. अब आपके पास क्या है, बेसिक मीडियम है, सो इन बेसिक मीडियम यू कैन ऐड OH नेगेटिव एनीवेयर। OH नेगेटिव हम कहाँ ऐड करें, रिएक्टेंट में ऐड करें या प्रोडक्ट में ऐड करें, आई नीड टू बैलेंस द चार्ज, और आपको नेगेटिव चार्ज ऐड करना है, तो कहाँ पे बैलेंस करें, कहाँ पे ऐड करें तो बैलेंस हो जाएगा, वेयर विल यू पुट नेगेटिव चार्ज सो दैट दिस होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, In the right side. प्रोडक्ट साइड, मेक सेंस है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल ऐड
8 OH negative. Now the charges are balanced, yes or no? ठीक है, चार्जेस बैलेंस्ड है Yes. ना? अब फिर आपने यहाँ पे अब आपके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन साथ साथ बैलेंस हो जाएगा. सो यू हैव 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O gives 2MnO2 plus 3I2 plus O2 प्लस 8 OH नेगेटिव. अब भी अगर कुछ है तो उसमें और भी किया जा सकता है. नाउ कैन यू प्लीज काउंट इट? लेकिन इज एवरीथिंग बैक? यस, खुदेजा, यू वांट टू से समथिंग? अभी ज्वाइन किया, खुदेजा ने लगता है. एक बार देख लीजिए सब कुछ बैलेंस है. Sir, oxygen? दिस O2 इज एक्स्ट्रा. Yes, sir. O2 फिर नहीं होगा इसमें. Find the following ionic equation in basic medium. O2 आपने भी हटा दिया है ना? I forgot to O2, write. I think O2 is a typo. Just let me see in the NCERT book. O2 हो सकता है टाइपो, जनरली O2 रहता नहीं है इस तरह से. Let me check. MnO4 नेगेटिव एंड क्या है, फिर I नेगेटिव है ना? नहीं, O2 is typo, my bad. O2 is not there in the reaction. ठीक है, O2 नहीं बनेगा. वो क्वेश्चन में O2 एक्स्ट्रा आ गया है. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन इन एनसीईआरटी. यहाँ से स्टार्ट करना है वैसे. ठीक है, सो यू कैन सी O2 इज नॉट हियर, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. टाइपो है सिर्फ. ठीक है, नथिंग एल्स. चलिए, इसके अलावा फिर अब थोड़ा सा यहाँ पे अब तो कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को, बट लेट मी चेक. एक और कोई हम लोग कर लेते हैं. आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी तब होगी ना जब इस तरह से सवाल आ जाए. परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन. अब इफ यू डोंट नो व्हाट इज ब्रोमेट तो फिर आपके पास दिक्कत हो सकती है. ब्रोमेट क्या होता है बताइए? Br, परमैंगनेट इज MnO4 नेगेटिव. ठीक है, इट रिएक्ट्स विद Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन, ये तो आप लोग को पता होगा, क्लोराइड ब्रोमाइड जो होता है ब्रोमाइड आयन. एंड इट गिव्स मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये भी आप लोग लिख सकते हैं काफी आसानी से. MnO2 प्लस ब्रोमेट इज BrO3 नेगेटिव. ठीक है, BrO3 नेगेटिव. अब थोड़ा इसको ट्राई करेंगे. यस, ऋषिता, आमना, खदीजा. ऋषिता एक बार ट्राई कीजिएगा इसको. Okay, sir.
Let me know if you are stuck. Okay, Harsha is done. Anyone stuck? Done, sir. Done? Send it to me. Harsha, yeah, correct, very good. What about Amna? Amna, are you done? No, sir. Are you stuck? No, I am doing. Can you send me whatever you have done till now? So I have it here. 1:2. Yeah, fine. Amna, can you please send it to me? Amna is gone. Khadija and Khudeja. Khadija and Khudeja. Yes, sir. Yes, Khadija. Are you done? Send your answers on my WhatsApp. अच्छा अब ये बताइए रिशिता एंड हर्षा सिंस यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन ना प्री बोर्ड वगैरह तो रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल इस तरह की चीजें पूछी गई थी क्या? No, sir. Just one question, 5 marks question, one two equations. So we have to solve one in acidic medium and the other in basic medium. That's all. That's all from redox reaction. And one MCQ question, but that was also easy. So what about you, Harsha? Anything Oh. regarding? Yes, Rishita. Yes, Rishita. Also the oxidation state, but that was not really. It was 3 marks. Achha, but nothing from electrode potential, galvanic cell, these type of things, right? No, sir. Okay. Harsha, what about you? No, sir, just one 3-mark question.
1 3 mark That's question. What, balancing or oxidation number? balancing, sir. Balancing, okay. Actually, see, the balancing itself is the major portion यहाँ पे है ना. See, oxidation number you are calculating for the first time, correct? 10th class में तो oxidation number नहीं था, है ना? Yes. Yes, so that's one thing that they are going to ask you guys. उसके बाद फिर the balancing of the redox reaction they are going to ask. And then there is one more जो थोड़ा सा आसान है, but आप लोग भूल सकते हैं, that is stock notation, जो starting में हम लोगों ने किया था. This, right? So stock notation भी पूछा जा सकता है. If they एक जनरली क्वेश्चन पेपर उस तरह से बनाना चाहिए कि आप लोगों ने क्या क्या नया सीखा है इस क्लास में, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स शुड बी टेस्टेड. ठीक है, तो स्टॉक नोटेशन भी जरूर देख लीजिएगा. रिगार्डिंग अब खदीजा, यू गाइस विल टेल मी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल. आर यू डन विद द प्री बोर्ड्स? एक तो ये लोग आंसर ही नहीं करते भाई. खदीजा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? खदीजा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? बट ऋषिता, हर्ष, यू मस्ट हैव सीन ना कि देयर इज अ पोर्शन जिसमें ऐसे एक सेल बना हुआ है, ZnSO4 CuSO4. टेक्स्ट बुक अगर आपने देखा हो तो, Yes, sir. है ना? बट उससे कुछ ना वो पढ़ाया गया आप लोग को, हर्षा? Yes, it was taught. अच्छा, इट वाज टॉट, ओके. बट सी, अगर आपको पढ़ना हो तो आई विल टीच किसी अलग से क्लास में, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, वहां पे आप पढ़ी तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? यहाँ पे आप इस पे फोकस कीजिए जिससे सवाल आता है, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर पे. ठीक है, इवन दो दैट कैन बी टॉट. और थोड़ा सा जैसा ना, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं. आप इसको क्लास 10th के नॉलेज से भी आंसर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, reaction of FeSO4 and Cu plus Cu gives CuSO4 does not occur. तो अगर आपको याद हो, क्लास 11th नॉन मेटल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, राइट? याद है आप लोगों को? Yes, sir. है ना? तो वहां से आंसर कर Yes. सकते हैं इसको, है ना? यू कैन आंसर वाई, ड्यू टू, rather because copper is less reactive than Fe. Zinc can displace copper from aqueous CuSO4, but Ag cannot. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Copper is less reactive than zinc, but more reactive than Ag. Solution of AgNO3 turns blue when copper rod is immersed in it. यहाँ पे लिखेंगे due to the following reaction. क्या होगा? Since copper is more reactive ना, तो copper को जब आप ऐड करेंगे AgNO3 में, this will convert itself to copper nitrate NO3 whole twice, and it will give you Ag like this. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. और उसके बाद अगर चलिए हम कुछ और बता दें आप लोगों को. एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपसे ना ये दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज गिवन. You may have seen this in the textbook, E naught values. Fine. So, what are these E naught values telling? Fe2 positive to Fe, that is reduction. Fe2 positive से Fe अगर आप convert करना चाह रहे हैं, then it requires this reaction. It requires 0.44 volts. ठीक है? But if you are going the other way around, Fe2 positive
then this reaction, it would give 0.44 volts of electricity. So the minus doesn't mean exothermic. Can you repeat yourself, Harsha? So the minus, like, it doesn't mean it's हाँ, माइनस का मतलब होता है रिक्वायर्स और प्लस का मतलब होता है गिव्स. ठीक है, मेक Okay. सेंस? yes sir. माइनस 44 वोल्ट्स यानी कि आपको अपनी तरफ से 44 वोल्ट्स देना पड़ेगा तब ये रिएक्शन होगा. बट दी अदर वे राउंड, अब ये देखिए ये रिएक्शन ना यहाँ पे शोन है कि Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, और वही अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देना E नॉट ऑफ Fe से Fe2 पॉजिटिव, then this value will be equal to 0.44 plus, because अब क्या हो रहा है, the opposite reactions happening. Make sense? Yes sir. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ अब बताइए. Fe का ऑक्सीडेशन आसान है, सॉरी दिस इज रिडक्शन ना. Fe का रिडक्शन आसान है या ऑक्सीडेशन आसान है? विच इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप से हो जाने वाला. जो आपको स्पॉन्टेनियस में आपको क्या होगा, इट इज जनरली एक्सोथर्मिक, जिससे आपको कुछ एनर्जी निकलती है. सो विच इज इजियर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा? नो आइडिया. Fe2 Oxidation. plus. ऑक्सीडेशन इज इजियर, मेक सेंस. Yes sir. और कॉपर Yes, का sir. क्या आसान होगा? व्हाट विल बी इजियर फॉर कॉपर? Reduction. रिडक्शन. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कॉपर टेंड्स टू गेट reduced. सही. if it is getting reduced itself, अगर वो खुद reduce हो रहा है, that means it will act as an oxidizing agent, it will oxidize the other, tends to get reduced and therefore can act as oxidizing agent. वही Fe का जो वैल्यू है उससे हमको ये पता चल रहा है, Fe tends to get oxidized and therefore can act as reducing agent. Make sense? Yes sir. ठीक है. अच्छा, इसमें ना एक चीज कॉपर नहीं लिखना अच्छा रहेगा. आई थिंक कॉपर 2+ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज टेलिंग अस द रिडक्शन पोटेंशियल, कि कितना रिड्यूस करने का पोटेंशियल है कॉपर 2+ टू कॉपर. कॉपर का रिडक्शन वो नहीं बता रहे, कॉपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा. सो आई थिंक दिस इज बेटर वर्ड. अब यहां से हम ये कह सकते हैं दैट द strength of oxidizing agent, strength of oxidizing agent, it is directly proportional to the reduction potential. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्ट्स में रहेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज डायरेक्टली, सॉरी नॉट डायरेक्टली बट रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम और उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो प्लीज कॉपी दिस डाउन, इसलिए अगर आसपास कुछ सवाल आ गया तो आप फिर यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज विल हेल्प यू इन डूइंग सम क्वेश्चंस अगर आ गया तो, बट नहीं आने के चांसेस है. 11th स्टैंडर्ड में जनरली वो पूछते नहीं है ये सारी चीजें. अच्छा, वहां से कितने सवाल थे आप लोग का, जो वो पोर्शन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस्टिमेशन वाला, प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन वाला, वहां से है क्वेश्चन? सर तो पेपर है मेरे पास, एक सेकंड देख लेते हैं. No sir, only from purification 2 marks. वो एडसॉर्प्शन वाला सवाल जो था, No sir, like है ना? no sir, what is thin layer chromatography they asked. हाँ वही एडसॉर्प्शन वाला ना, जिसका आंसर था एडसॉर्प्शन, है ना? No sir, 2 mark question in the section B. क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, एक सेकंड. सेक्शन बी में व्हाट इज पीएलसी, explain its principle and procedure. Okay, what about you, Rishita? Any question from purification and estimation? No, sir. No questions. Okay, चलिए. ठीक है, तब is there anything in redox reaction that you want that you have doubt in? कुछ और बताइए तो हम
We'll get some questions from there. The balancing question in my paper was a bit difficult for me, sir. I couldn't really solve it. अच्छा ठीक है, just give me a second. टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है ना उसमें? No, sir. कितना नंबर क्वेश्चन है बताएंगे? 26 आई 26. थिंक. Yeah. ये जो सर्कल है, अच्छा वो सारे क्वेश्चंस यू आर डाउटफुल अबाउट दैट ना? मतलब आपने लिखा है बट यू आर डाउटफुल. Yes, sir. ये कुछ क्वेश्चंस ना जनरली दे आर वेरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसके लिए बच्चा प्रिपेयर नहीं करता है. दैट जैसे आप एक सवाल आया हुआ है ना कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, है ना? Yes. तो जनरली मतलब ये सब चीजें ना, वो तब मतलब ये पता नहीं क्यों अभी तक ये सारी चीजें दिया जाता है. एप्लीकेशन बेस्ड सवाल अभी भी नहीं, बहुत कम पूछे जाते हैं. और मतलब थ्योरी याद करके किसको क्या फायदा होगा? वेस्पर थ्योरी अप्लाई करने की बात हो कि शेप पूछा था, शेप पूछा है किसी का? शेप, Yes, sir. Yes. शेप भी पूछा हुआ है. ठीक है, खैर ये मतलब क्वेश्चन आने से ये फायदा हो जाता है कि मतलब कुछ चीजें जो आपको अनइम्पोर्टेंट लगती हैं दे ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, है ना? चलिए ये रिएक्शन आपके पास H2O2 gives plus Fe2 positive to Fe3 positive, तो obviously Fe2 positive gives Fe3 positive plus 1 electron, right? अब उसके बाद है आपके पास H2O2, है ना? H2O2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है? H2O में कन्वर्ट हो रहा है. तो हियर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज स्टिल +1, और ऑक्सीजन का है -1. मेक सेंस? सही है ना ये? है ना ये सर्जा? Yes, sir. ठीक है, H2O2 का peroxide में -1 होता है. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. ये +1 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे अब कितना हो गया? -2 हो चुका है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज H2O2 gives H2O gives H2O. अच्छा, अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम ऑक्सीजन बैलेंस करना चाह रहे हैं. आई एम नॉट केयरिंग अबाउट, हमने 2 लिख दिया बिकॉज आई नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन. नाउ ईच ऑक्सीजन एटम में -1 से -2 जा रहा है. दैट मींस देयर इज अ चेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1. तो it will be eating how many electrons? If there are 2 oxygen atom, it will be eating 2 electrons. Make sense? Sir, the hydrogen doesn't matter. अभी नहीं मैटर करेगा, वो बाद में बैलेंस हो जाएगा. अभी हम लोग क्या मैटर कर रहा है? अभी द स्पीशी विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, उसको हम लोग, वो मैटर कर रहा है हमारे लिए. एंड द इलेक्ट्रॉन्स इट इज मैटरिंग, राइट? ठीक है, Okay, sir. हमेशा ये करना. जैसे हम लोग करते हैं, नहीं लिख देते हैं ऐसे Cr2O7 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके पास हमने 2Cr3 पॉजिटिव बस लिखा. ऑक्सीजन के बारे में तो कुछ नहीं लिखते हैं इनिशियली, है ना? उसी तरह से बिल्कुल. नो, अब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2. इट विल बी नाउ balanced as 2. This 2 electron will be cancelled. 2 Fe2 positive plus H2O2 gives 2 Fe3 positive plus 3 H2O. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग को क्या देखना है? चार्ज देखना है ना. सो चार्ज की अगर 3H2 लिख दिया हमने, माय बैड गाइस, 2H2 है ना, 2H2. ठीक है, अब हम लोग क्या देखना है? चार्ज देखना है. सो हियर वी आर हैविंग 2 Fe2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा +4, और यहाँ पे हो जाएगा +6. सो वेयर शुड आई ऐड द वाटर? The reactant, sir. Water नहीं, H plus H plus. My bad, my bad. Where should I add the H plus? Reactant side. Reactant side. कितना H plus डालेंगे? 2H plus, right? सही है? Yes. हो गया बैलेंस? So no need of water. बैलेंस हुआ कि नहीं? अभी तो देखो बैलेंस हुआ कि नहीं. बैलेंस है. पानी तो पहले से ही है ना, असल में इस वजह से आपको वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, Yes, sir. है ना? तो Yes. ये ध्यान दे, ऐसा नहीं है कि हमने 2H plus डाला तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. H plus हम लोग डालते किस वजह से? इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस.
After that we add water in order to balance what? In order to balance the hydrogens. और अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर बैलेंस करने की क्या जरूरत है? मेक सेंस? Yes. ठीक है, एनीथिंग एल्स हर्षा? No, sir. नहीं, ठीक। सो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज, आई थिंक वो केमिकल बॉन्डिंग है। वीक वाइज था, बट अब आप लोग की जो क्लासेस दैट इज ऑलमोस्ट डेली